students, welcome to Chemistry Video Solutions, Engineering Stream, ANTS Part Test 3. Question number 26. In question number 26, what should be the value of Kc for the reaction 2SO2 plus O2 gives rise to 2SO3? He has given equation 2SO2 plus O2 gives rise to 2SO3. If the amounts are SO3 is 48 grams, SO2 is 12.8 grams and O2 is 9.6 grams at equilibrium. He has given the masses of all these substances at equilibrium. So mass of SO2 is equal to 12.8, mass of SO3 is equal to 48 grams. So mass of oxygen is equal to 9.6 grams. To calculate Kc, so we should need number of moles. So number of moles of SO2 is equal to 12.8 by sulfur is 32 grams, oxygen 32, 64. Number of moles of SO3 is 48 by sulfur is 32, 48, 80. Number of moles of oxygen is equal to 9.6 by 32. So now Kc is equal to SO3 square brackets में रखेंगे. This is nothing but the active mass. So that is equal to 48 by whole square by. If you simplify this one, you will get answer 30. So the option is B. For question number 26, option is B. Next. Question number 27. When 3 moles of A and 1 mole of B are mixed in 1 liter vessel, the following reaction takes place. A plus B gives rise to 2C. Initially कितना moles लिया है sir? 3 moles of A and 1 mole of B initially. At equilibrium, 1.5 moles of C is formed. At equilibrium, so 3 minus X, 1 minus X, where X is nothing but the degree of dissociation. So here you will get 2x. 2x का value है 1.5, which is nothing but 3 by 2. X is nothing but 3 by 4. So I am taking those values. So he is asked the equilibrium constant. Here Kp is equal to Kc. So Kc is equal to, which is nothing but x का value 3 by 4 है, 2x 3 by 2 है, 3 by 2 whole square. यहाँ आपको लेना पड़ेगा 3 minus 3 by 4, 1 minus 3 by 4. Here you will get 9 by 4. 4 3s are 12 minus 3. 9 by 4. 1 by 4. This one and cancel. You will get the answer 4. 27 option D. Question number 28. He has given for which reaction at 298 Kelvin the value of Kp by Kc will be maximum and minimum respectively. देखो the relationship in between Kp and Kc is Kp is equal to Kc into RT to the power of delta n. So Kp by Kc is equal to RT to the power of delta n. To get maximum and minimum values, delta n should be maximum. Calculate delta n. Delta n is nothing but number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. So for first one, delta n value for A, so here 2 moles of products, 1 mole of reactant, 2 minus 1, 1 here. For B, 2 moles of products, here 3 moles of reactants, 2 minus 3 is minus 1. For C, 4, here 2, 4 minus 2, 2. For D, it is 7 minus 4, 3. So D is equal to 3 will be maximum, B is equal to minus 1 is minimum. So answer continuously you have to take D and B. So 28th option is B. Question number 29. He has given 2B gives rise to B2. D is the observed vapor density and D is theoretical vapor density. Theoretical vapor density is nothing but molecular weight by 2. Capital D is equal to molecular weight by 2. So that is for initial molecule. Here he is asking the relationship for alpha, capital D and small d. Small d is vapor density of gaseous mixture at equilibrium. Actually here 2 cases are there. One is association, second one is dissociation.
These two cases are important, sir. Association and dissociation relationship of alpha and this D and small d, capital D and small d. For dissociation, alpha is equal to capital D minus small d by small d into n minus 1. N is nothing but number of moles obtained from 1 mole. So dissociation. Here for association, alpha is equal to capital D minus small d by small d into 1 by n minus 1, where n is 2 for dimerization, where n is 3 for trimerization, so where n is equal to 4 for tetramerization. So now he is asking for the relationship in between alpha, capital D and small d for association. Here two B atoms are becoming B2. So now I am taking, so 2B is converting into B2, so association is taking place. For association, particularly dimerization is taking place, n value is 2. So alpha is equal to capital D minus small d 1 by 2 minus 1. I can write this one as 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2 minus d by 2. So I can write that one as small d minus capital D, 2 पर चला जाएगा, d get cancelled, 2 minus 2d by d. So option C. I hope you understood this one. So ये दोनों important है sir, association, dissociation दोनों important है. Here he asked for association. Next question number 30. Again he has given one equation and at equilibrium bromine का pressure दिया गया है, which is nothing but P by 9, where P is the total pressure. पहले equation लिखेंगे 2NO/Br, so 2NO plus Br2. So equilibrium में आप सोचिए P by 9 होते तो obviously जितना मोल्स रहेगा स्टाइक्योमेट्रिकली डबल क्वांटिटी ऑफ NO रहेगा कि नहीं रहेगा इक्विलिब्रियम पे. ये जितना प्रेशर एग्जिबिट करेगा इससे डबल प्रेशर एग्जिबिट करेगा 2P by 9. So now total pressure he has given P. Total pressure P is equal to pressure of NO/Br plus pressure of NO plus pressure of Br2. हमको pressure of NO/Br कैलकुलेट करना पड़ेगा, which is nothing but P minus pressure of NO minus pressure of Br2. So P minus ये 2P by 9 है minus P by 9. Now pressure of NO/Br is equal to P minus 3P by 9. So 9P minus 3P, 2P by 3. So now from the equation Kp is equal to pressure of NO square, pressure of Br2 by pressure of NO, already you know that, pressure of Br2, pressure of NO/Br calculated. इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, आपको P स्क्वायर इंटू P क्यूब, यहाँ P स्क्वायर है, P क्यूब बाई P स्क्वायर, P बचेगा, Kp is equal to P by 81 आएगा, Kp by P is equal to 1 by 81. So the option will be B. Question number 31. He has given Kp and Kp dash are the equilibrium constant of the two reactions given below. So 1 by 2 N2 plus 3 by 2 H2 NH3. So this is Kp N2 plus 3H2 to NH3. This is Kp dash. देखिए ये रिएक्शन को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये रिएक्शन आएगा. इसका मतलब Kp स्क्वायर इज इक्वल टू Kp डैश. सो Kp इज इक्वल टू रूट ओवर Kp. आपको पता है किसी भी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने से, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो पावर पे चला जाएगा. सो Kp इज इक्वल टू रूट ओवर Kp डैश. सो द ऑप्शन विल बी बी. Question number 32. The precipitate of CaF2 obtained when equal volumes of the following are mixed. See sir, here two things are there. One is ionization product and the second one is a solubility product. कोई भी solvent लीजिए, maximum cases में water रहेगा, इसके अंदर AB dissolve कीजिए. AB dissociates to give A plus and B minus, क्योंकि A B इलेक्ट्रोलाइट है, so aqueous phase में dissolve होने के बाद A plus and B minus. The concentration of A plus and B minus is known as ionization product. If the solution is saturated, then ionization product is equal to solubility product.
for saturated solution. If ionization product is greater than solubility product, then precipitation takes place. So जितना डिसॉल्व कर सकता है उससे भी ज़्यादा हो गया है, जितना भी ज़्यादा हुआ वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा. So हमारा रिक्वायरमेंट है ionization product should be greater than solubility product, then precipitation takes place. What happens, sir, if ionization product is less than solubility product? If ionization product is less than solubility product, then the solution is considered as unsaturated solution. And one more important point, so this solubility product concept is applicable for sparingly soluble salts. Now you see, he has given solubility product of CaF2 1.7 into 10 to the power of minus 10. CaF2 ऐसा split होगा sir, Ca2 plus plus 2F minus. I hope you are clear. What is solubility product definition? Solubility product is defined as product of concentrations of ions, when their powers are raised to a numerical value which is equal to number of times they are available in stoichiometric equation. Their powers are raised to a numerical value which is equal to number of times they are available in stoichiometric equation. Ca2 plus, here 1, so it is 1. F minus 2, so here it is 2. So now he has given concentration of Ca2 plus and F minus, so we substitute those values. First one, 10 to the power of minus 4 into 10 to the power of minus 4 square. This is Ca2 plus concentration. It is 10 to the power of minus 4 F minus concentration, which is nothing but 10 to the power of minus 12. 10 to the power of minus 12 is the ionization product, which is smaller than 10 to the power of minus 10. Second one, 10 to the power of minus 2, 10 to the power of minus 3 whole square, which is nothing but 3 2s are 6 to 8, 10 to the power of minus 8, greater than 10 to the power of minus 10. So option B is correct. बाकी दोनों का भी कीजिए. 10 to the power of minus 5 square minus 10 minus 13 आएगा, यहाँ भी minus 13 ही आ जाएगा. So ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया है सर, दिक्कत नहीं है, आपको बी ऑप्शन मिल गया है. 32 क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है. सो जब ऑप्शंस ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, बाकी ऑप्शन सेम होते तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगा सर. सो हियर ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 33, ही हैज गिवन 20 ml ऑफ 0.1 molar H2SO4. This is added to 30 ml of 0.2 molar NH4OH. So whenever he has given different solutions like this, this is the concept of chemical equivalence. Number of equivalents of acid calculate करो, number of equivalents of base calculate करो. So दोनों को neutralize कराने के बाद salt form होगा, so buffer solution होगा. Buffer solution का हम लोग pH calculate करेंगे. 20 into 0.1 into 2. Don't forget this n factor. Number of equivalents we have to calculate. H2SO4 के लिए n factor 2 है. So इसलिए 20 into 0.12 4 मिली इक्वलेंट्स आएगा. वॉल्यूम ml में लिया है इसलिए मिली इक्वलेंट्स आया है. वॉल्यूम लीटर्स में लेते तो इक्वलेंट्स आएगा. इसका 30 into 0.2 यानी H4OH के लिए n फैक्टर 1 ही है, सो 6 मिली इक्वलेंट्स आएगा. आपके पास एसिड 4 मिली इक्वलेंट्स है, आपके पास बेस 6 मिली इक्वलेंट्स है. साल्ट कितना फॉर्म होगा? साल्ट 4 मिली इक्वलेंट्स फॉर्म होगा क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट बन गया है, प्लस 2 मिली इक्वलेंट्स ऑफ बेस लेफ्ट हियर. नाउ साल्ट ऑफ weak base with strong acid and weak base, so it's a buffer solution. It is an example of mixed buffer. Weak base plus salt of weak base with strong acid, mixed buffer कहते हैं इसको. ये बेसिक है. POH is equal to PKB plus log salt by base concentration. हमेशा हम एक्टिव मासेस लेते हैं सर, मोल्स पर लीटर. PKB दिया हुआ है 4.7 प्लस log सॉल्ट फॉर्म हुआ है 4 2, log 2 आएगा सर 5. सर जल्दीबाजी में 5 नहीं टिक करने का, वहाँ पूछा है pH, आपको मिला है POH, सो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH 9. सो ऑप्शन इज ए सर, ऑप्शन इज ए नॉट डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. 34 में क्या पूछा है?
The solubility product of a sparingly soluble salt AX2 is 3.2 into 10 to the power of minus 11. Its solubility पूछा गया है. बढ़िया. AX2 gives rise to A2 plus 2x minus. इसको S पकड़िए, इसको 2s पकड़िए. KSP solubility product of concentrations of ions when their powers are raised to a numerical value which is equal to number of times they are available in stoichiometric equation. So which is nothing but 4s cube. KSP is equal to 4s cube. So 4s cube is equal to 3.2 into 10 to the power of minus 11. क्या इसको मैंने 32 into 10 to the power of minus 12 लिख सकता हूँ? S cube is equal to 32 by 4, 8 into 10 to the power of minus 12. So cube root S is equal to 2 into 10 to the power of minus 4 moles per liter. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने से आपको यूनिट मिलेगा मोल्स पर लीटर. कभी भी एग्जाम के अंदर मोल्स पर लीटर पे नहीं देता है सर, ऑप्शंस ग्राम पर लीटर देता है. तब मॉलिक्यूलर वेट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो देख के लिखना पड़ेगा आपको क्या पूछा है. यहाँ सिंपली मोल्स पर लीटर ही पूछा गया है, इसलिए 2 into 10 to the power of minus 4. So C option is correct. C option is correct. Question number 35. Solubility of AgCl will be minimum in. Sir, AgCl splits into Ag plus Cl minus. Solubility minimum होने के लिए हमको कॉमन आयन इफेक्ट देखना पड़ेगा. What is कॉमन आयन इफेक्ट? अब देखिए, मैं एक सॉल्ट लेता हूँ एंड एसिड लेता हूँ, ये दोनों में एक कॉमन आयन होनी चाहिए. CH3COOH is weak acid, so there exists an equilibrium in between molecule and dissociated ions CH3COO minus and H plus. मैंने एक सॉल्ट लेता हूँ CH3COO Na, CH3COO minus plus Na plus. अभी देखिए, ऑलरेडी इट इज ए वीक एसिड. वीक एसिड का डिसोसिएशन बहुत कम है, सो नंबर ऑफ आयन्स जनरेटेड इन द सॉल्यूशंस आर वेरी लेस. In addition to that, I have taken a salt which is having a common ion. Due to that, at equilibrium concentration of CH3COO minus is increased. You know the Le Chatelier principle. Equilibrium पे external pressure apply किया है, concentration of CH3COO minus बढ़ा दिया है. This equation tries to decrease the concentration of CH3COO minus by reacting it with H plus and it becomes CH3COOH. That means the dissociation of weak acid or weak base is furtherly suppressed in the presence of a strong electrolyte having a common ion, which is nothing but common ion effect. Due to this common ion effect, solubility of the salt decreases. देखिए यहाँ क्या क्या दिया है, आपको दिया है. So 0.001 molar AgNO3, so molar Ag plus. Second one pure water H2O pure, ये रेफरेंस है. 0.01 कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल जनरेट 2 मोल Cl माइनस आयन्स into 2. Fourth one, so 0.01 molar Cl माइनस. सो यहाँ कॉमन आयन Ag प्लस भी है, Cl माइनस भी है, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन को आपको चूज करना पड़ेगा जिसमें कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. सो थर्ड वन में Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जिसमें कॉमन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, इसके अंदर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी कम रहेगा. सो द ऑप्शन विल बी सी. Which of the following salts will give highest pH in water? Highest pH. Question number 36. सर, सॉल्यूशन के अंदर हाईएस्ट पीएच पाने के लिए आपको एनायनिक हाइड्रोलिसिस होनी चाहिए. मान लीजिए मैंने CH3COO Na सॉल्ट लेता हूँ. दिस वन स्प्लिट्स इनटू CH3COO minus plus Na plus. This salt is made up of a strong base and weak acid. This is the salt of weak acid and strong base. जब मैं ऐसा सॉल्ट क्रिएट करता हूँ, सॉल्ट क्रिएट करके वाटर में डिसॉल्व करता हूँ, Na plus coming out from NaOH which is strong in nature, so it becomes weak. Na plus becomes weak. लेकिन CH3COO minus कहाँ से आया है? CH3COOH से आया है. CH3COOH is weak. So, इसलिए CH3COO minus स्ट्रॉन्ग बनेगा. स्ट्रॉन्ग बनने के कारण ये वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर से H प्लस को एक्सेप्ट करके सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा. आपको पता है सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते तो pH बढ़ेगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते तो POH बढ़ेगा. अभी हमको पूछना है सो हाईएस्ट pH in water.
सो आउट ऑफ 4 salts कहाँ एनायॉनिक हाइड्रोलिसिस होगा आपको देखना पड़ेगा। KCl, K प्लस Cl माइनस दोनों वीक हैं, NaCl दोनों वीक हैं, Na2CO3. So Na2CO3 is a salt made up of a strong base NaOH and weak acid H2CO3. So anionic hydrolysis takes place in this case. So C is the option. In C, OH minus concentration will be more, due to that pH will be high. CuSO4 में Cu2 plus हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा, वो कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस है। कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि वो OH माइनस आयंस को कंज्यूम करके H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ाएगा, सो pH मिनिमम रहेगा। ये दोनों का pH 7 रहेगा। सो ऑप्शन इज C। क्वेश्चन नंबर 37। सर ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दिया हूं मैंने। द pH रेंज ऑफ मिथाइल रेड इंडिकेटर, मिथाइल रेड पूछा है सर, नॉट मिथाइल ऑरेंज। सर इंडिकेटर सर weak organic acids or bases which changes their color from medium to medium. Acidic medium में एक कलर दिखाएगा, बेसिक मीडियम में एक कलर दिखाएगा, ड्यू टू बेंजेनॉइड फॉर्म एंड क्विनोनॉइड फॉर्म। मिथाइल रेड इंडिकेटर का स्ट्रक्चर देखा जाए, ये मिलेगा आपको। ये वीक ऑर्गेनिक एसिड है, एसिडिक मीडियम में रेड कलर एग्जिबिट करेगा, सो बेसिक मीडियम में येलो कलर एग्जिबिट करेगा। मेंस के लिए कलर्स भी इंपॉर्टेंट है सर, डोंट फॉरगेट टू रीड इंडिकेटर्स, देयर रेंजेस एंड देयर कलर्स। ये वीक ऑर्गेनिक एसिड है, इसका रेंज रहेगा सर 4.2 to 6.2 6.3 है सब, 4 to 6 पकड़ लीजिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 8.3 से 10 तक आपको जाएगा फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Now I am moving to question number 38. From this point organic chemistry will start. 38. So different carbocations मैंने दिया हूँ यहाँ। So carbocation से मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, स्टेबिलिटी पूछ रहा हूँ। CH3 ऑक्सीजन, CH2 प्लस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर रहेगा, कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इसको स्टेबलाइज कर पाएगा, पॉजिटिव चार्ज। CH3 NHCH2 पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, सल्फर भी डोनेट करेगा, लेकिन सल्फर का एबिलिटी थोड़ा कम रहेगा सर इस मामले में, क्योंकि कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, एम्प्टी ऑर्बिटल 2p है, लेकिन यहाँ सल्फर में लोन पेयर जाएगा 3p में, एनर्जी गैप आ जाएगा, इसलिए ये दोनों में अच्छा डोनेशन होगा रेजोनेंस की वजह से। एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए अच्छी तरह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। सो इस केस में हमको देखना पड़ेगा, पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द सेकंड वन इज एनर्जी गैप इन बिटवीन द ऑर्बिटल्स। 2p से 2p में इलेक्ट्रॉन्स आसानी से जाएगा, 3p 2p 4p 2p, जब एनर्जी गैप बढ़ते जाएगा तब इलेक्ट्रॉन मूव करने में दिक्कत होगा। सो इसलिए बहुत अच्छी तरह से B स्टेबलाइज करेगा, इसके बाद ये, इसके बाद C। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 39। द pKa वैल्यूज ऑफ द एसिड्स A to D are found to be 4.19, 3.14, 4.46 and 4.76. The acid having pKa of 3.41. pKa is inversely proportional to acidic strength. pKa वैल्यू जितना कम रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ वैल्यू उतना ज्यादा रहेगा। सो लोएस्ट pKa वैल्यू दिया गया है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। आउट ऑफ दीज 4 स्ट्रॉन्ग ढूंढना पड़ेगा आपको। यहाँ 2 पॉइंट्स मैं बताता हूँ। फॉर्मिक एसिड is one and only acid which is more acidic than aromatic carboxylic acids. After that aliphatic carboxylic acids. Here electron donating group है OCH3. OCH3 electron donating group decreases acidic strength. Here NO2 is electron withdrawing group increases acidic strength. So COOH with NO2, already aromatic carboxylic acids are more acidic, क्योंकि formic acid वहाँ दिया ही नहीं है, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। So B का D के बीच में D ज़्यादा रहेगा, D का A का बीच में कंपेयर करते तो D का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कोई ग्रुप नहीं है। सो D का C का कंपेयर करें तो C में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ। सो ऑब्वियसली C इज स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ दीज 4। सो pKa वैल्यू 3.41 बिलोंग्स टू C। Question number 40. The order of heat of hydrogenation in the following compounds is
सो आल्कीन का स्टेबिलिटी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऊपर एक्सप्लेन किया जाता है. इफ यू आर सप्लाइंग 1 mole of hydrogen to an alkene becomes alkane, which is more stable. Stability increases. Due to increase in stability, it releases some amount of energy. The amount of energy released by that alkene when it is converting into alkane is called as heat of hydrogenation. Alkene का stability ज़्यादा होते तो heat of hydrogenation कम रहेगा. So heat of hydrogenation is inversely proportional to stability. So जिसका stability कम है उसका heat of hydrogenation ज़्यादा रहेगा. अभी हमको 4 मॉलिक्यूल्स दिया गया है. दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल. स्ट्रक्चर्स मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ. आल्कीन का स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करना है तो आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होगा एंड दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होगा. अभी देखिए 1 2 3 4. सो 1 यहाँ 2 हाइड्रोजन्स रहेगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ 3 हाइड्रोजन्स, यहाँ 2 हाइड्रोजन्स. सी हियर रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस है लेकिन यहाँ 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन. फर्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर नो रेजोनेंस, ओनली 1 2 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. सेकंड के अंदर रेजोनेंस नहीं है but 1 2 3 4 5 6 7 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. 3 के अंदर रेजोनेंस प्लस 3 + 3 6 4 10 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स. 4 के अंदर रेजोनेंस प्लस 2 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स. सो जिसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उसका ज़्यादा रहेगा. आपको पता है RHI, दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर. रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट. सबसे कम 1, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है. 2 4 3 1 2 4 3. ऑप्शन बी इज करेक्ट. आपको समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर 41. सो न्यूक्लियोफिलिसिटी, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स इज. पहले दिया है CH3COO-, दूसरा दिया है H2O, तीसरा दिया है CH3. सब में डोनेटिंग एटम ऑक्सीजन ही है. इफ डोनेटिंग एटम इज सेम, चार्ज्ड वन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक कंपेयर्ड टू न्यूट्रल. सो ये 1 3 4 पहले आएगा, इसके बाद 3 आएगा, नो डाउट इन दैट वन. इसके बाद हम बात करें तो सो 4 का सबसे ज्यादा रहेगा. 4 का क्यों ज्यादा रहेगा कि 4 में नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है लेकिन ये दोनों में डीलोकलाइजेशन में है. डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किल हो जाएगा. यहाँ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहेगा, यहाँ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इंक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज्ड. सो 4 greater than 1 greater than 3 greater than 2. So option D is correct. Delocalization में पार्टिसिपेट करे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा. सो इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज्ड होते तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा रहेगा. चार्ज्ड न्यूट्रल में फर्स्ट प्रायोरिटी चार्ज्ड को ही देना पड़ेगा, इसके बाद न्यूट्रल देखेंगे. सो ऑप्शन डी. Question number 42. Which of the following is strongest base? Here NH2 is attached to ring, NH2 attached to ring, NH2 attached to ring. A, B, C aromatic amine. D is not directly attached to the ring, so no resonance. So that is why D is nothing but aliphatic amine. Aliphatic amines are more basic compared to aromatic amines. The reason behind that one is when NH2 attached to benzene ring, nitrogen is not available for donation. It participates in resonance. But here nitrogen is not directly attached to the benzene ring. So that means here lone pair is available for donation. So it is more basic. So for 42 option is D. For 43, decreasing order of stability of given carbocations. कार्बोकैटियन स्टेबिलिटी में हमेशा याद रखिए सर. सो रेजोनेंस का प्रायोरिटी देना है, इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट. लेकिन ये तीनों से ज्यादा आपको देना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज इन्वॉल्वड इन एरोमेटिसिटी. पॉजिटिव चार्ज इज ए पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी and positive charge participating in aromaticity and it is undergoing delocalization. See, in the case of 1 and 3, positive charge is a part of aromaticity, whereas 3, positive charge is attached to the aromatic ring. So that is why first one is more. हमेशा आप
प्रेफरेंस इसको देना पड़ेगा जिस पॉजिटिव चार्ज ने एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हुआ है। ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ऑफ 1 इज मोर कंपेयर्ड टू 3। सो 3 के बाद इसके अंदर रेजोनेंस है, इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस का प्रायोरिटी देंगे। सो 1 3 2 4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, arrange the following carbanions in decreasing order of stability. Carbanions stability increased with number of electron withdrawing groups. See here, CHO is withdrawing group. Here 1 withdrawing group is present. Here 2 withdrawing groups are present. Here 3 withdrawing groups are present. Here withdrawing group efficiency is decreased compared to this one. Why? Because aldehyde is a good withdrawing group compared to ketone. So सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 4 को मिलेगा सर, क्योंकि 4 के अंदर 3 withdrawing groups हैं. C double bond OH acts as a strong withdrawing group compared to C double bond O CH3. What is the reason? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बने रहेगा, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कार्बन एटम के ऊपर बनेगा, ये CH3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इसको सप्रेस करेगा। कार्बन एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा उतना स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप बनेगा और कार्बन आयन को इतना अच्छी तरह से स्टेबलाइज करेगा। 4 में 3 है, इसके बाद आपको आएगा 3 क्योंकि स्ट्रॉन्ग, इसके बाद 2, इसके बाद 1, 4 3 2 1, so option is C. So number of withdrawing groups directly proportional to carbon ion stability. Question number 45. The degree of unsaturation in C3HC, Cl3, C3H4O, C4H5N. So degree of unsaturation is nothing but dBe, sir. dBe is equal to number of carbon atoms minus, so hydrogen atoms by 2 plus N by 2, number of nitrogens by 2 minus X by 2 plus 1. C minus hydrogen by 2 plus N by 2 minus halogens by 2 plus 1. For the first one, number of carbon atoms are 3 minus 3 by 2, nitrogens नहीं है, so minus 3 by 2 plus 1. 3 minus 3 by 2 minus 3 by 2, 2 3 by 2, 3 minus 3 get cancelled, so first one is option 1. Second one, 3 minus 4 by 2 plus 1. 4 by 2 is 2, 3 minus 2 is 1, 1 plus 1 is 2. Third one, C4H5N. 4 minus 5 by 2 plus 1 by 2 plus 1. 4 by 2, 2 आएगा, 4 से 2 निकालते तो 2, 2 plus 1, 3. So the 1, 2, 3. Option B is correct. Now we will move to integer type questions. How many resonating structures are there for phenanthrene? Phenanthrene structure को हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं सर, ये सिंपल टेक्निक है। सो पहले ऐसा लिखिएगा, सो दिस इज वन स्ट्रक्चर। अभी आपको क्या करना है कि ये बॉन्ड को एक बार राइट हैंड साइड शिफ्ट करो, एक स्ट्रक्चर मिलेगा। एक बार ये बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट करो, एक स्ट्रक्चर मिलेगा। ड्रॉ करके देखो, 2 हो गया, 2 + 1 3, थर्ड वन। इसी को मैंने दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, 4 हो गया। अभी हमको 5th वन ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए ये बॉन्ड यहाँ एक है, यहाँ 2 कंडीशन में आया है, यहाँ 2 कंडीशंस में आया है, 3 कंडीशंस में ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। मैंने क्या बताया आपको समझ में आया होगा, शॉर्टकट कैसे बताया। पहले रिंग ड्रॉ किया था, एक बॉन्ड राइट हैंड साइड शिफ्ट किया था, एक बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया था। तब आपको देखिए ऊपर में ये दोनों आ गया है, ऊपर में ये दोनों आ गया है, यहाँ तीनों नीचे आ गया है, यहाँ तीनों ऊपर आ गया है। सो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर 5। यहाँ एक ऊपर है, 2 नीचे है। सो दिस कॉम्बिनेशंस यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाइल ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ phenanthrene। 47 इन्होंने ग्रुप्स दिया है, OCH3, NO2, CN, CH3, NHCO, CH3, C double bond OR, OH, COOH, Cl। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पूछा है। सो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स लेते तो NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, CN मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, COR मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, COOH मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसका आंसर 4। याद रखिए Cl, NO deactivating, but these are orthopara. Nitroso group and chlorine group, these 2 are deactivating but orthopara directing group. So these 4 are meta directing groups here.
Question number 48. SO2 plus half O2 gives rise to SO3. Kp is equal to 2 into 10 to the power of 12 at 27 degrees centigrade and 1 atmosphere pressure. What is the Kc? Equation दिया है SO2 plus half O2 gives rise to SO3. Kp दिया है, Kc पूछ रहा है. Okay. Kp is equal to Kc into RT to the power of delta n. Kc is equal to Kp by RT to the power of delta n. Delta n आपको पता है, अभी डिस्कस किया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स. 1 minus 1 plus 1 by 2. So delta n is minus 1 by 2. So Kp का वैल्यू कितना दिया है? 2 into 10 to the power of 12. R वैल्यू कितना है? 0.082 into. So टेम्परेचर चाहिए, केल्विन में लेना पड़ेगा 27, 273, 300. 8.21 into 3, 3 2s are 6, 24.63. अप्रॉक्सीमेटली 25 ले सकता हूँ. 25 यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा स्टेप आपको, थोड़ा रब करूँगा. Kp is 2 into 10 to the power of 12 by RT value is 25. Approximately delta n is minus 1 by 2. 2 into 10 to the power of 12 into 25 to the power of 1 by 2. 25 to the power of 1 by 2 square root 5 है. 5 2s are 10. 10 into 10 to the power of 12. 10 to the power of 13. So I can write this one as 1 into 10 to the power of 13. So the answer for 48 is 1. So केल है डेल्टा एन कैलकुलेट करने के लिए. डेल्टा एन आप एक बार कैलकुलेट किया है, आपको आंसर मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 49. Ka for acidic acid CH3COOH, Kb for NH4OH given the pH of ammonium acetate. Salt of weak acid plus weak base. When this salt is dissolved in water, pH of water is 7 plus half into pKa minus pKb. क्योंकि weak acids का weak bases का dissociation constant के ऊपर डिपेंड होगा. So दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा 7. 49 क्वेश्चन 7 है ऑप्शन. Question number 50. When 0.05 mole of HCl is added in 200 ml of a buffer solution, the pH of the solution decreases by 0.05 unit. What is the buffer capacity of the solution? Very good. Buffer capacity is important, sir. Mains में बहुत बार पूछा है buffer capacity. Buffer capacity is number of moles of acid or base added to 1 liter buffer solution. Not for 200 ml, 300 ml, 500 ml. आपको लेना पड़ेगा 1 लीटर के लिए by change in pH. अब देखिए 200 ml के लिए 0.05 होते तो 1 लीटर के लिए 5 into 200 ml is 1 लीटर. 1 लीटर के लिए कितना होगा? 0.25. This is added for so 1 liter of buffer solution. Change in pH कितना है? 0.05. Change in pH को मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है. So change in pH is 0.05. So 5 times. So 50 question number and its answer is 5. So I hope you understood all the questions very well. I hope everybody is preparing well for your exam 2026 JEE mains exam. So all the very best to one and all. Thank you.